चलो आगे बढ़ते हैं तो it is the first like a day we have, right? And with the first day we will start something very important, and the topic we are going to cover today is like inner classes. Okay, so okay, fine. Let's take a first topic which is inner classes. Okay, okay guys, fine. आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, इनर क्लासेस। इनर क्लासेस को समझने से पहले वी हैव सीन क्लासेस, राइट? वी हैव okay, we got the concept of classes. We have seen like what is class, what is object, how we like implement those things. जैसे कि जैसे मैं इनर क्लास को बताने से पहले आपको एक चीज पूछता हूँ। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, राइट? वी हैव सीन नेस्टेड लूप्स, राइट? जैसे एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिखा जाता है, बराबर है ना? जैसे एक लूप है, सपोज आई हैव अ लूप, let's say x loop I have, and inside this I have written y loop. Okay, so this is the y loop I have. So we call it as a nested structure, right? We have a one loop over inside of another. Okay, अब nested in inner classes क्या होता है? What we call to what we say this inner class? Inner class का मतलब होता है you have a class, and I will say, let's say it's a class A you have. Okay, and inside a class A you have another class which is class B. Is it making sense, guys? बताइए. Class B. So what do you have actually here? You have a class A, and of course, what class will have? Class will have data members, है ना? है ना, मयूरी? Plus member function. Yes, is that clear? ये तो आपको पता है, data member and member function. Along with data member and member function, what a class can consist? What can class can have a data member? Okay, it will have. Class will have a member function. Yes, it will have, and class can have another class as well. Is it make sense? Lucky. Okay, so class is a collection of data member member function. Along with you can have another classes as well. So suppose I have this class which you can see here, and I have a class B. Okay, so what we call to this class B? This class B is called as an inner class. What is called? Inner class. Is that clear? बताइए. लकी, लीना, समझ आ रहा है? कुछ एनीथिंग यू आर गेटिंग आउट ऑफ, लाइक जो समझ नहीं आ रहा? ठीक, तो हम इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? इनर क्लासेस का कंसेप्ट हमें आगे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम एनोनिमस क्लासेस पढ़ेंगे, जब भी हम लैम्बडा एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, है ना? तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें फोकस से सुनना है, ठीक है? और बहुत इजी भी है, तो आपको इसको लेके कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड मोर ऑफ हम इस तरह से चलेंगे कि हम कोड को लिख लिख के समझेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम आज एक क्लास लेते हैं, एंड आई विल क्रिएट अ सेपरेट क्लास। तो आपको पता है क्लासेस कैसे बनाना है? सपोज आप जो भी काम करोगे ना, जो भी आपकी फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर आपको एक पैकेज का नाम दिखेगा। और फॉर नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल वाला फाइल बना लेता हूँ। ओके, आई विल क्रिएट अ जावा क्लास, और आई कैन क्रिएट अ पैकेज। सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एसआरसी मिलेगा, एसआरसी के अंदर आपको मेन वाला फोल्डर मिलेगा। ओके, यू विल गेट अ मेन। ओके, तो मेन एक पैकेज है, जो भी आपको फोल्डर दिख रहा है, इट इज अ पैकेज। पैकेज का मतलब होता है फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है? अब यहाँ पे मेन दिख रहा है, मेन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे मुझे एक डायरेक्टरी या फिर न्यू डायरेक्टरी का नाम आएगा। बट ओके, आई विल जस्ट गो हियर कोटलिन। अभी मैं जो बैचेस में पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें कोटलिन पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कोटलिन फॉर एंड्रॉइड। दैट्स वाई यू आर गेटिंग दिस स्ट्रक्चर, अदरवाइज यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट ओके, मैं थोड़ा अलग स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ, जो कि जावा के रिलेटेड ही है। Okay, so okay, so I will open this Java 2023 for now, and we will write all the codes here. ठीक है? तो जावा के अंदर हम कोड लिखेंगे, ताकि आप भी आपने भी क्या करना है? देखो, आपको ये फोल्डर मिल जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर, देन आपको एसआरसी मिल जाएगा। एसआरसी के अंदर आपको वॉट एवर यू विल गेट एसआरसी है। तो एसआरसी का मतलब होता है हियर यू विल हैव ऑल द पैकेजेस। तो यहाँ पे आपको एसआरसी मिलेगा सबसे पहले, कोई टेंशन मत लो। देखो, मैं इसको थोड़ा और बैक करता हूँ। आई विल जस्ट गो बैक, ताकि आप इसको समझ पाओ, ठीक है? मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ, ये वाला भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है?
और मैं ये वाला भी क्लोज कर देता हूँ। तो आपको जावा का फोल्डर मिल जाएगा सबसे पहले, उसके नीचे आपको एसआरसी का फोल्डर मिलेगा। तो हम इस एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, और न्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे पैकेज का नाम आ जाएगा, ठीक है। पैकेज आएगा तो यहाँ पे मैं पैकेज पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडवांस जावा। ओके, तो एडवांस जावा, सारा का सारा कोड हम एडवांस जावा के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ तक मैंने कैसे किया ये समझ आया? लकी लीना मयूरी, देखो एसआरसी का फोल्डर है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, और पैकेज बना रहा हूँ, पैकेज यानी एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसके अंदर सारा का सारा कोड हम लिखेंगे, डे वन से लास्ट तक, ठीक है। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं एडवांस जावा, ठीक है, शॉर्ट में एंटर कर लेते हैं। अब एडवांस जावा करने के बाद में आपको एक फोल्डर मिल गया एडवांस जावा का। ओके, यू हैव गॉट दिस एडवांस जावा फोल्डर। अब इस पे राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, और जावा क्लास बनाना है। तो अभी जो जावा क्लास बनाएंगे हम उस फोल्डर के अंदर बनाने वाले हैं, एडवांस जावा के अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे इनर क्लासेस, तो इनर क्लासेस, ठीक है, इसका नाम दे दिया इनर क्लासेस। एंटर करेंगे, तो जैसे ही एंटर करोगे तो अभी आपको दिख जाएगा एडवांस जावा फोल्डर के अंदर हमारे पास इनर क्लासेस पहला जो है ना वो क्लास बन रखा है। ये दिख, इतना समझ में आ गया आपको? दिस मच इज क्लियर? ओके, तो अब मैं इनर क्लासेस और आगे जो जो टॉपिक्स हम देखेंगे ना, तो वो मैं देखूंगा। अब इनर क्लासेस मैंने नाम दिया है, तो फॉर माय, ताकि जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो डे वन, डे टू, डे थ्री आएगा ना, तो इनर क्लासेस इसको वन कर देता हूँ, जीरो वन कर देता हूँ मैं। यानी डे नंबर वन होगा, फिर डे नंबर टू होगा, थ्री होगा ना, तो इस तरह से बढ़ते रहेंगे। तो वन है हमारा, तो यहाँ पे मैंने वन लिखा है। ओके, लेट्स से आई विल राइट वन। तो आज हमारा पहला दिन है तो मैंने वन लिखा है। इसके बाद भी टू होगा, फिर थ्री होगा, फोर होगा, जो जो चीज़ें लिखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर फॉर नाउ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लास बन गया, ठीक है। दिस इज द क्लास आई हैव, and of course I should have main method here, so I will write public static void main. Okay, I have. Let's try to understand this. What is this inner classes? I will create a class A. Okay, now, okay, I have a class A. What I can have inside a class A? Let's say I have something like an integer A. Let's say it is a 12. Okay, and I will write public void print data, or let's say I will have a display, whatever you can say. Okay, simple रखते हैं, display. This is what I have, and now I will just print uh, value of A is, and then I will write A. This much is clear what we have written here. Okay, now so class A is consisting A is equal to 12, and this function. Okay, so if I wanted to access A or this function, what I need actually here, if I wanted to access A or this display function, what we need, Mayuri? Yes, Lucky. We need an object, right? So is let's create an object, because without object we cannot access. Let's create. I will write obj. Okay, A class name, object name, obj A is equal to new A. Fine. I have an object now. Can we access? Like let's say I will write uh, obja dot display. Okay, so with the help of this obja we can access this method, right, Lucky? Lena, is that clear? Okay, what we can do more is, I have A here as well. Can we access A? Yeah, you can access. You can, you just have to write system.print. Okay, then you will write obja dot a, right? Because we have A is a value, right? A जो है वो एक वेरिएबल है, तो आपको उसको प्रिंट करना है, यू वांटेड टू प्रिंट इट ना, तो मैंने इसलिए इसको ऐसा लिखा है। आई विल जस्ट रिमूव दिस लाइन फर्स्ट। सपोज आई वांटेड टू एक्सेस ए, सो आई विल लेट obj1 obja डॉट a, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। बट अगर ऐसा लिखूंगा तो व्हाट आई वांट कि a की वैल्यू प्रिंट हो जाए, जो जो भी a की वैल्यू होगा जो वो प्रिंट हो जाए। ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल को मैं डिक्लेयर इस तरह से कर दूं। सपोज आई विल राइट इंटीजर a इज इक्वल टू 12, समथिंग लाइक दिस। तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये जो a वेरिएबल है ये सेम क्लास के अंदर है जो जिसमें हम लिख रहे हैं, बट ये जो a है ना ये अदर क्लासेस से आ रहा है। तो obj a से हम a को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको अगर प्रिंट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट लिखेंगे, देन वी विल राइट दिस। सो व्हाट विल हैपन, जो भी वैल्यू obj डॉट a की होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस। अगर हम इसको रन करते हैं, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। ऑफ कोर्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज whatever the value of a, then we will get value here, this it will print. Okay, so what you can see here, the value of a is 12,
which is printing by this display method. Okay, it is this line is printing value of a is a, and then the second line which we have written here, it is printing the where obj dot a. It is the a. It is same thing it is doing, but above we are using function to like get the value of a. Okay, so here we are calling function to get the value of a, and here we are only using a. Okay, that is fine. तो अगर मुझे किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, सो आई कैन आई हैव टू आई नीड एन ऑब्जेक्ट. ओके, दैट इज क्लियर. बट व्हाट इफ आई हैव अनदर क्लास which is class b. Okay, is that now, is it make sense? Now you have, this is the inner class. बताओ ये समझ आया? Yeah. Okay, now let's see, I have something inside this b. I have an integer b, and b will have some value is equal to 100. Okay, and it has some functions as well. Let's say, can we have this display function here as well? Okay, let's try. Yeah, so you can have a display function. See what is going on. In a class A, you have these two properties, means you have a and you have a display function, right? But when you are having the same method in the B, it is not the same. Means this display method is present in A, okay, and this display method is present in B. So this method which you can see here, it is a property of A, and this method which you can see here, it is a property of b. So that's why they are not conflicting, that oh, you cannot use this display here as we have did before. No, you can use, because b has its own boundaries. B can have anything. Okay, so they will not conflict because of their boundaries. So this is what you can see here is boundary of b. So b can declare anything. B can declare the variable which might be there in the a, integer a is equal to 12, but you will not get any kind of issues, because this b is a separate space. B has its separate home. He can have anything, right? Now you can have a display here as well. It will not conflict. That is clear, guys? Okay, now what I need, actually, uh, I need to use this display, or I will write, let's say, I will write there display A and display B. That's fine. So now what I want to execute this display B method, right? I wanted to execute this display B, and this display B method is present in B class, right? Is that clear? बताइए. Okay, this display b is present in class b. Okay, so if I will try, so this display is present in class b, right? So can I do something like this? I will display a here. Okay, and can I do something like this? B obj b is equal to new b. Okay, if we will try to do this, we are getting error, right? Yes, guys, एक minute, huh? Okay, sorry guys, अभी आ रहा है sound? Okay, so see what we are doing. See, this display method is present in B. Okay, so we are just trying to create this B, right? Object of B, but we are getting an issue. What actually this issue is? It's saying I don't know who is B, but B is there, right? You can see B is here, now. Lucky, Lina, you can see B is here, but what you can see as well here, b is there. Okay, there is no problem, there is no confusion that b is not there, b is there. But b is not an individual class, it is a property of a, right? Okay, so we cannot go and directly say b obj b is equal to new b. That will not have, that will gives us error, of course. Why? Because the way we are trying to access a display a, because display is the property of this class A, right? Now, if I wanted to
use anything inside of this B, I need object of B. That is clear? Yes, guys? Okay. But we cannot create objects like this directly because we are getting error. Suppose I need of course I need an object to access properties of B, but when I'm doing so, we are getting issue. Why? Because it's saying B is not defined. It is saying if you will hover here, you will say cannot resolve this symbol. Okay. It's saying B is not defined something. Okay. So we cannot create an object of B. Suppose you wanted to create object of B, but you cannot create directly because B is a property of A. So class B is a property of A. Is that clear, guys? Just try to understand what is happening. I will just go up little bit. Okay, say we have a class. This is a class A you have, and okay, so this is a class A. Here you have a display. Okay, so which we have access to the display A, and inside this you have a class which is class B, right? And inside a class B you have a display B method, right, Lina? Okay, so the way we actually, if I wanted to access A, we need an object of A, right? Object of A, right? So with the help of object of A I can access display A, right, है ना? With the object of A we can access the display A method. Is that clear, guys? That much is clear? Is that make sense? Okay. The same way if I wanted the object of B, because without object of B we cannot access this display B. So if I wanted object of B, to create the object of B, listen very carefully, to create an object of B, what will I need then? Object of B, i need I need object of A. What I need, Lucky, Lina? Object of, because see, this class B is a property of A. Okay, and if I wanted to do anything with the property, maybe you wanted to create object, but you wanted to do it in which is there inside a B, right? This is the class A property. So if you want to access anything which is present inside the B, you need object. So how will you get object? You will get object. If you wanted to create object, you have to, like, you have to use the object of A. Means if you wanted to like object of B, how will you get the object of B? You will get object of B from object of A, right? Why? Because this object is a property of A. या बताइए, लकी, लेना समझ में आ रहा है? Okay, so how we can create an object of B? Let's say, let's try to understand. Okay, so earlier we have like I will just remove these things so that we can, like, we have seen display A, that is clear. Okay, so now if I wanted, like, object of B, so how we can create object of B, right? Let's say, uh, suppose जब भी हम किसी फोल्डर के अंदर घुसते हैं ना, suppose for simplicity I wanted to represent that I wanted to create the object of B, right? I wanted to create object of B. So how we can represent? We can I write something like this: A dot B. So this dot is represent what? A inside B. समझ में आ रहा है? Inside of means when I am saying A dot B, तो A dot B का मतलब क्या है? A के अंदर जो B है, समझ आया? Is that making sense? I wanted to create object of B ना, लकी लीना, बताओ इतना समझ आ रहा है? तो अगर मुझे बी को रिप्रेजेंट करना है, इफ आई वांटेड टू रिप्रेजेंट द बी, तो क्या मैं बी को ऐसे लिख सकता हूँ? अगर ऐसे लिख दूंगा तो एरर आ जाएगा, है ना? समझ आया? क्योंकि बी तो ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज वो अंदर है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ए इनसाइड ऑफ बी। ए कैसे लगाना पड़ेगा? आई हैव टू राइट ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या है कि जो ए है उसके अंदर हमारा बी है, समझ आया? देन ए इनसाइड ऑफ बी, दैट मेक सेंस? Okay, so I want to represent B, huh? So I cannot go and I write B. It will gives you error, right? We have seen that. So how to resolve that? How to
Till, okay, I want to access B, but B is inside of A, right? So I will write A dot B. Now you can see when I am writing A dot, you can see B option, right? Can you see B? Okay, so A dot B. Okay, so this is the way I am trying to say I want to access B. Means I cannot write something like here B directly. If you will write B, you will get error because it will say I don't know B. So we'll say A inside. So A के अंदर है A inside B. Okay, okay. So B is present inside it. So we will write A dot B. Then I will write obj. Let's say objb. And can I write, okay, so I have given A dot B, B is present inside A, then OBJB. Can I write new B directly? Can I write something like this? I'm writing, okay, B is present inside of A, then OBJB is equal to new B. But when I'm trying to use new B, I'm getting an issue. Why? It is again giving me error. So I wanted to create object. That is clear. I wanted to create an object. This thing is clear that okay, B is present inside of A. Then this is the reference name, and this is equal to new B. But still we are getting issue because when you if I wanted to create an object of B, I need an object of A. I need help of object of A. So how I can create object of B? Okay. So create an object. So here on the left side we have declared object. We have not initialized it. Okay. So A dot B, I want to create an object of B, then object reference variable name. Then I will write obj first. I need if I wanted to create object of B, I need object of A. Obj dot new, then we'll write B. Is it make sense? Obj dot new B. Yeah, Lucky, Lina. So how we create object of B of the inner class? We will write A dot B. Okay, A dot B obj B. Okay, obj B is equal to, I cannot do directly obj b is equal to new b, it will give us. So I need help of object of A. So obj A, क्योंकि आपका जो A है ना वो ऑब्जेक्ट, आपका जो B है ना वो ऑब्जेक्ट A की प्रॉपर्टी है, ऐसा समझो जो B है ना वो ऑब्जेक्ट A की प्रॉपर्टी है, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं ऑब्जेक्ट बना सकते ना. So we'll write obj A dot new, then we'll write B. Make sense? Lucky, Lina? Okay, now can you access like objb objb dot display? Yeah, you can access display b, right? And here just run this code and let's see what we'll get. Okay, now let's go up. Can you see here? Okay, the value of a is 12 because we have copy paste the same method. So I will add value of uh, I will just remove this plus b. Okay, and here I will write value of b is plus b. Okay, now let's run this. Okay, see, you are getting value of b is 100, right? Guys, is that clear? This much is clear? Please बताइए. कुछ भी problem है इसके अंदर? Any problem do you have, guys? Okay, let's go a little bit of exploration. ठीक है? Suppose I have a class X. Okay, now, okay, I have a class X, no problem. Then I have like string, let's say string X. Okay, is equal to, let's say, hmm, let's say John. Okay, this is what I have, and then I will write void, public void. Okay, public void display name. ओके, लेट्स से इट इज द सेम फैमिली, क्योंकि हम पेरेंट की एक जो क्लास है उसी के अंदर बहुत सारे क्लासेस है. जैसे we have a family, and then family they have children and they have a lot of like members. So suppose we have X, and X is here we are getting display X, and the name of X is, let's say, we'll change it John to mm, hers. Okay, let's say hers, and you can say it is like a name as well. Okay, and display name will just print the name is plus name. Okay, fine. Let's create a children inside this. Okay, can we say, we can say it is a children. Okay, it is present inside the same class. I will write class Y. Okay, now this is a class Y, and
the class Y will also have this. Okay, no problem at all. It can have this. Okay, and I will just change name to Lena. Let's say Lucky. Okay, and name will be this. Um, okay, this is the Y we have. Let's create another class, which is a class Z. Okay, and then okay, so I cannot have this parenthesis here. Okay, this is class Z, and so we can have this same as well. Hers, I will write here to Pooja. Display name will be, it will print the name, that is fine. Okay, so this structure, have you got it guys, how it's look like for now? Okay, now Lucky, tell me what I how should I, how can we access this class which is Y? Okay, so your name is fit there because that's why I'm asking you. I wanted to access this display name method, how can we do that? Okay, why we need an object, why we need an object of X before accessing this display name which is presented by? Yes, very good. Y and Z are inner classes. Very good. Okay. So if they are inner classes, then why we need means then how we are going to access them, their properties? How we are going to access their properties? This name or display name. We need object of huh? Okay. Obj x is equal to new x. Okay, that is fine. Then hmm 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 okay, then objy, okay, is equal to x dot y, no, x dot new y. Okay, x dot new y. Okay, Lucky. Now what is happening here? Y, here we have y, and here what is the issue we're getting? Okay, I have not mentioned. Okay, let's say I write x dot y, then I will write objy, then I need objx dot new y, right, Lucky? Then I will write objy dot display name, right? है ना? Okay, Lina, tell me how we can access the properties of this Z. हाँ हाँ, objx, हाँ, dot new Z. Okay, then you can access like objz dot display, right? Fine. Great, great guys. You have got this. You are very smart. Okay. Now what if I try to make this structure even more complex so that you can give me more better answers? I will just change this a few things. I have a class A. Inside this, I have a class. Let's say I have a class Z, and inside this class Z, I have a class P. Okay, it has its own display name. Okay, okay, Mayuri. Okay, now let's say, can we have class P here as well? Yeah, you can have, no problem. Okay, can you have this same things here as well? Yeah, you can have same thing, right? Can we change this name? Yeah, we'll write Mayuri. Okay, now by taking this like schema into the consideration, how we can access this P with the help of, means how we can access the property of P, Mayuri? X dot P.
Listen, बहुत अच्छे, very good. See, uh, if I wanted to access Z, what we need? Can we write Z directly here? No, right? No. So you will write A dot Z. Okay. So A dot Z will represent what? This class, right? Okay, that is fine. So A dot Z. Do we have OBJ of A dot Z? लकी मयूरी बताओ लीना मयूरी बताओ बोलो बोलो कंफ्यूज नहीं होना टेंशन मत ले यहाँ पे सुनो मेरे बात सुनना है ठीक है लीना लकी आराम से समझो कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो okay so I suppose I wanted to access this display name which is present inside a p right so I cannot directly write p here it will gives us error right है ना p नहीं लिख सकते okay so what I can write okay this p is present inside of z so can I write z dot p directly no it will also gives us error right okay so how I can represent this p uh, can I write a dot z first which is a dot z yes this one so when I am writing a dot z it is representing what it is representing this okay okay Mayuri Lina okay now a dot z do we have the object of a suppose this not suppose this p is present inside a dot z right है ना so do we have the object of a dot z because if I want to you create object of p I need object of a dot z right okay then in that case how we will create object of p and access this display name p Mayuri okay ob obj let's say objaz you have objaz now how you will create okay Mayuri a dot z very good you are getting it you are closer in the left hand side you have to tell okay where it exit where the p is exist okay be calm you are very close you have to tell where p is okay you have to tell p where is p on the left side okay so you cannot write p directly now so you have to tell okay where is a p so how will you tell where is a p okay very good now that was very good next obj p yes because this here ha very good equal to a obj az because see you wanted to create object now object of p here you have tell that okay where p exists you said a dot z dot p so here your p is belong you can write this you can take it something like you have mentioned p okay ठीक है okay by this line you can say you are telling okay p okay है ना आप डायरेक्टली पी तो नहीं लिख सकते ना तो आपने क्या बोला ए के अंदर जेड के अंदर पी है बट यहाँ पे आप बता किसको रहे हो पी को ही बता रहे हो ना है ना देन आपने बताया ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे पी ठीक है लीना लकी मयूरी इतना समझ में आ गया ओके देन व्हाट यू विल डू मयूरी बताओ ऑब्जेक्ट ऑफ किसका ऑब्जेक्ट लगेगा अगर आपको ऑब्जेक्ट ऑफ पी बनाना है तो आपको किसका ऑब्जेक्ट लगेगा ओके तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे ओबीजे बोलो बोलो ओबीजे एजी डॉट न्यू देन पी राइट you wanted to create an object of p देखो a obj a dot z that is clear you have got this object Mayuri okay so you will write new you wanted to create a new object right
then you will write p. Yeah, will it work? Lucky, Lina? ओके, लेट्स चेक। मयूरी आप बताओ, पक्का समझ में आया? पक्का पक्का, कोई उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो एक और बार और देखते हैं, ठीक है? देखो ये जो p है वो किसके अंदर रिसाइड करता है? z के अंदर। z किसके अंदर है? x के अंदर, बराबर है। यानी ए जेड दो, उनका हमें ये चाहिए, तो ए जेड का क्या हमारे पास कुछ है? ए जेड नहीं, सॉरी, एक्स जेड। तो एक्स जेड का ऑब्जेक्ट तो हमारे पास बन रखा है ना, विच इज जेड हियर, राइट? So can we write x dot z dot p? Can we see p here? Yeah, guys, we will get p ना, है ना? obj p, है ना? obj p is equal to, then we will write। अच्छा, किसका ऑब्जेक्ट लगेगा मुझे? मुझे p का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे किस, इससे पहले किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? obj, obj z, राइट? बिकॉज x dot z का ऑब्जेक्ट कौन दे रहा है? z ही दे रहा है ना? डॉट डॉट न्यू, देन व्हाट विल राइट p? इज दैट क्लियर गाइस? लकी, लीना, मयूरी बताओ, इतना समझ आया? देन विल राइट objp डॉट डिस्प्ले नेम। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। डू यू नीड एनी मोर एग्जांपल्स टू लाइक इवन clear any kind of confusions you have? Okay, fine. तो ये समझ में आया कि we when we talk about inner classes we need object of its parent class, that is clear, है ना? ओके, विदाउट दैट वी कैन नॉट डू दैट, है ना? अगर आप लिखने का ट्राई करेंगे तो आपको इशू आ जाएगा। चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा आगे बढ़ने पहले ही तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से समझेंगे हम। यहाँ तक आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, यहाँ तक जो भी देखा हुआ है थोड़ा सा थोड़ा भी, इसमें कोई प्रॉब्लम है? लीना, लकी, ओके। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ मीन्स लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक। हमने स्टैटिक की बात कर रखी है ना? वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टैटिक कीवर्ड, है ना? लकी, लीना, व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड? स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है? गलती करोगे ना, डरना नहीं है बिल्कुल। जब आपके माइंड में होगा मैं गलत बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट व्हाट आई वांट कि आप कुछ तो बोलो, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। गलती होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है लेना, लकी? जस्ट से okay, very good. And okay, so static keyword is being used where? First we have used it with variables, है ना? है ना मयूरी? We have used static keyword with variables. Then where we have used the static keyword? With functions. Very good. Okay, so on so we have used static variables, static functions. Okay, we have static variables, static functions. मैंने आपको static block के बारे में नहीं बताया ना? static block क्या होता है? static block बताया? We have something which is called as a static block. static block बता हुआ है लेना? ओके, सो हमें तीन चीज होती है, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, और स्टैटिक ब्लॉक की क्यों यूज किया जाता है, लकी पता है? हम्म। तो नहीं नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको हम स्टैटिक रखते हैं ना। बट स्टैटिक ब्लॉक्स कहाँ पे यूज होते हैं? वेयर वी यूज स्टैटिक ब्लॉक्स? लेना, थोड़ा याद आ रहा है? थोड़ा ट्राई करो याद करने का, या आएगा याद? हम्म। अच्छा, हमारे पास कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं? वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के। पहला पहला टाइप होता है लोकल, दूसरा इंस्टेंस, एंड तीसरा स्टैटिक। वेरी गुड, स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल किसकी प्रॉपर्टी होती है? हम्म। इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट? मीन्स जब भी आप स्टैटिक बना देते हो ना किसी चीजों को, तो वो किसी,
हाँ, वेरी गुड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास, बहुत अच्छे। जैसे आप स्टैटिक बना देते हो ना किसी चीज़ों को, तो वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रहती। ये चीज़ें हमने बात में पहले भी देखी हुई है ना। जैसे आप किसी को स्टैटिक बना देते हो ना, तो इट विल बी नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्लास, है कि नहीं? It will be property of an object. That is very good, like Mayuri, sorry, lucky. तो static variables are those variables, okay, जब variables की बात कर रहे हो, okay, which will be the property of a class. Is that clear? Means it will not be the property of an object. Is that clear? Okay. And अगर मेरे पास static variables है, okay, अगर मेरे पास static variables है, to initialize the static variable, है ना, है कि नहीं? स्टैटिक वेरिएबल हम क्या यूज करते हैं? स्टैटिक ब्लॉक्स भी यूज करते हैं। समझ आ गया? हम्म। लीना, समझ आया? क्यों, देखो, अगर मुझे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है तो मुझे क्या, व्हाट आर द ऑप्शंस आई हैव टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स? ओके, आई हैव अ कंस्ट्रक्टर, आई कैन यूज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज वेरिएबल, यस गाइस? लकी, ओके, what else I can use to initialize any variables? Sorry, not, and to initialize a variable, what I can use? First, I can use in like constructor, right? Second, what can I use? Setters. We have a concept of setters, right? Get data, print data, set data, है ना, है कि नहीं? आई कैन यूज दिस। तो जो स्टैटिक है वो भी तो एक वेरिएबल है। स्टैटिक भी जो होता है वो भी एक वेरिएबल ही होता है। तो उसको इनिशियलाइज हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं, पहली चीज। जो स्टैटिक वेरिएबल्स है उनको आप कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सेटर के जरिए भी इनिशियलाइज कर सकते हो, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको इनिशियलाइज करने के अलग से ब्लॉक यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टैटिक ब्लॉक, है ना। तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जाता है। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो जो भी स्टैटिक होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्लास की जरूरत, क्लास के रेफरेंस की जरूरत नहीं होती। इज दैट क्लियर गाइस? बताओ। जैसे, ओके, सो ये मैंने बता दिया अबाउट द लाइक इनर क्लासेस। अब थोड़ा आगे जाते हैं और इनर क्लासेस को थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, इनर क्लास थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो मैं इसके अंदर और एक क्लास बना देता हूँ, और देखो यहाँ पे आप जरा यहाँ पे नजर डालना, यहाँ पे नजर डाला है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होगी। कैन यू सी सम थिंग्स हियर गाइस? हियर आपको इनर क्लास दिख रहा है, आपको ए दिख रहा है, आपको एक्स दिख रहा है ना? ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक्चुअली जब आप कोड को रन करते हो ना, जब एग्जीक्यूट होता है कोड, तो उसके दो दो फाइल्स में जनरेट होते हैं ना, एक होता है बाइट कोड, एक होता है क्लास फाइल, बराबर है? एक होता है क्लास फाइल, एक होता है बाइट कोड। समझ आया? बट फॉर नाउ लेट्स इग्नोर दिस, इसको आपने इतना टेंशन लेना है? तो आपको ये इस क्लास के अंदर ए दिख रहा है, एक्स दिख रहा है ना? ये क्या दिख रहा है? ऐसे समझो, इट इज अ चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास, इनर क्लास। समझ आया? Means what we have, what are what are the classes we have? Let's go and try to understand here. I have a inner class one which is main method, so you will get inner class one, right? Can you see this here? I have a one class here, so you will get this inner class here, है ना? समझ आ गया? लीना, लकी, okay. Inside this, what you have a. So what where I have a, so here you can see I have a, right? A class I have. Then I have X as well. So what you can see, you have X as well, right? But you are not getting the classes which is present inside of X, because you will, it is not accessible directly. Okay, if you wanted to see Y, Z, P, you have to give like mention X dot Y dot Z, something like this. Okay, so these three classes we have, we will discuss more about it, why we are getting these classes. For now we will keep it simple. Okay, so this is the code I have. Okay, now what I will do, uh, can we add it somewhere? Okay, let's try. तो ओके, मैं आपको कोड ये जो है ना रेगुलर जो कोड लिखते हैं इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? फिलहाल हम इसको ऐसे देखते हैं कि क्या मैं इसको आपको पीडीएफ के अंदर दे सकता हूँ, क्या आप उसको रिवाइज कर सको, ठीक है? ओके, तो
let's try to copy and paste because I don't know whether it will fit or not. Okay, let's see. I just wanted कि आप जो भी चीज़ें सीखोगे ना उसका मटेरियल आपके पास में होना चाहिए. ओके, आई विल ऐड सम इमेजेस लेटर ऑन हियर. जो भी चीज़ जो जो जितने भी चीज़ें मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्लास के बाद में उसकी इमेजेस इसके अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो. ठीक है, तो फॉर नाउ वी विल मेक इट सिंपल. Let's try to like understand what I'm trying to tell you. Okay, so for that I will create another class. Let's say here I will write Java class static class example. Okay, इसको रखते हैं 02. It is a second topic, that's why I have written 02. Okay, इसको रखते हैं public static void main. Okay, let's try to understand the point I'm trying to make here. Okay, now let's see. I have a class student. Okay, okay, fine. And in a class student, what what is that property which can be same for all the students? What will be that? Let's think. In student class, if you are talking, if the branch, maybe branch is the same for all students. If you are talking about the student of a particular branch, then maybe the branch will be the same for all the students. Okay, so you'll write branch. uh, okay, so it will be same. We will write static string, and here I'll write string, and I will write branch. So branch. Okay, so I have not initialized this static variable, right? To initialize this static variable, what we can use? We can use static block. So I will write static, opening brace, closing brace, and here I will write branch is equal to, let's say, CSE. Okay, is that clear, guys? How it's work? Hmm? समझ आया? Okay, now that's fine. So we have a static variable. Hmm. So now, the definition we have like talked about before, which Lucky has reminded me of, that okay, static variables is not a property of any object. Okay, it is not a property of object. It is a property of class. Okay, so if it is a property of class, can we access this static variable with the class name itself? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ guys? बताओ. लीना, लकी. Okay, okay. I will make it simple. See, this static variable is not a property of any object, right? इतना समझ में आ गया. लीना, लकी, बताओ, सॉरी, मयूरी, बताओ. स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्लास, सॉरी, एनी ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके. सो इफ दिस स्टैटिक वेरिएबल इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सो डू आई नीड ऑब्जेक्ट टू एक्सेस दिस ब्रांच? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है. करके देखते हैं. Let's try. I will try to access that static variable with the object. Okay, let's create object. Student s1 is equal to new student, no problem, s1 dot. Okay, but we are not getting any option like branch here, right? If you will try to do this, it will give us error, right? है ना? लकी, देना, मेरे समझ आया इतना? Okay, why we are getting an issue? Because this branch is not. अगर किसी की वो प्रॉपर्टी नहीं है और वो कोई एक्सेस करने जाएगा, तो ऑफकोर्स उसको इशू आना ही आना है. बराबर है ना? जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो एक्सेस करेगा तो इशू आएगा. बराबर. तो ये जो स्टूडेंट है, सॉरी, ये जो हमारा ब्रांच है वो स्टैटिक है, तो यू कैन नॉट एक्सेस दैट स्टैटिक वेरिएबल विद द क्लास रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, है ना? ये समझ में आ गया? ये तो हमने करके दिख लिया, आप स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास के रेफरेंस से यूज नहीं कर सकते. ये समझ में आ गया? रेफरेंस है ना, ऑब्जेक्ट से यूज नहीं कर सकते. आप स्टैटिक वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से यूज नहीं कर सकते. ये समझ में आ गया इतना? Yes. So how can we access this? So we are saying this branch is a property of student class. So can I write system.print student dot branch directly? Yeah, I can access, नहीं, right? Yes, Lucky, समझ आ रहा है? लीना, मेरी, बताओ. I can access this branch with the help of class name itself because this branch is a property of student, not an object. Make sense? That's why okay, you can access it. Okay, no problem. Suppose I have some method here. I will write void print data.
Okay, print data. I have this method here. I open close, and inside this what I will do, I will just print uh, branch is plus branch. Okay, plus uh, branch. Okay, is that clear, guys? So now, can I make this method static as well? Okay, okay. By saying this is static, we cannot access that method with this object reference. So let obj, let's say s1 is equal to new student, s1 dot. If I will try s1 dot, print data. Okay, we won't able to use this method as well, right? Lucky, है ना? समझ आ रहा है? I'm trying to access it, but issue getting an issue. Okay, because this print data method is property of a class. So how you will write? You will write student dot print data. You don't need an object of student. Why? मयूरी बताओ. हाँ, तो जो भी वेरिएबल्स स्टैटिक होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? क्लास की. What does it mean? ऑब्जेक्ट की. हाँ. हाँ, so if I wanted to access anything which is static, so how I can access that? हाँ हाँ हाँ. See, if I wanted to access anything which is static in a class, I can access those properties or a variable with the help of class name itself. That is clear? Lucky, Lina? Okay, so that's clear from. Okay, that is clear. So I will just um, use this too so that you will get this material as well. Okay, fine. Now I will change this, change the scenario a little bit. Now let's try to create a class. I have a class. Okay, let's create this. Let's say this is the outer class. Okay, that is clear, guys. Okay, can we see it is outer class? Okay, सो अभी तक हमने स्टैटिक वेरिएबल्स की डिस्कस किया. स्टैटिक हमें पता है स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होते हैं. हैव यू हियर्ड एनीथिंग अबाउट स्टैटिक क्लास? नो राइट, हैवंट इट, है कि नहीं लकी, लीना? अच्छा अच्छा, दैट्स व्हाट वी आर लाइक टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, स्टैटिक क्लास. ओके, तो हमने स्टैटिक वेरिएबल्स देखे, स्टैटिक, ये स्टैटिक जो भी ऊपर की चीजें हमने वो देख रखी है, बट स्टैटिक क्लास नहीं देखा. क्या हम क्लास को स्टैटिक बना सकते हैं? कैन वी हैव अ क्लास एज अ स्टैटिक? लेट्स सी. सपोज आई हैव दिस आउटर क्लास. कैन आई राइट हियर स्टैटिक? एंड इफ आई ट्राई, वी विल गेट एन एरर, राइट? है ना लकी? लेना, मैं समझ में आ गया. So you can have a static class. That is clear. You can have it, but the outer class cannot be a static. आप outer class को static नहीं कर सकते. That is clear. Okay. So see, we have did, we have created outer class, and we are trying to make this outer class static. But here we are getting issue, means if we are getting red means we are doing something wrong. Okay, let's remove this. We cannot make this class outer. Fine. Let's try. I have something class B, and let's say inner class I have, and this class have something like something to say. Okay, I will write void say, and what will it say? Let's say it say hey. Okay, that's what this inner class wanted to say it to us. Okay, hey, welcome to advanced Java. Okay, now it's saying this. Fine. Now guys, by just taking this much example in front of you, if I wanted to access this, say how can I access, बताइए लगे. Okay, so outer s1 is equal to new outer. Okay, fine, then
Okay, just tell me how to do that. Okay. Hmm. S1 new inner, right? Okay, very good. Lucky, आपने बहुत अच्छे बताया, ठीक है. So we have got this S2. So can we access now S2 dot say? Yeah, we can access, right? Lucky. Okay, so that is fine. That is clear. Now, what I will do here, that is very crazy. Okay, can I create this inner class as a static? Because see, to access this inner class, I need object of S1, right? है ना? समझ में आ रहा है? To access this inner class, I need object of S1. We have no, like, we don't have any other options. We need to create this. Okay. Is any other way we have? What if I will make this class static? Can I make this class static? Okay, so I have written here static and we are not getting issue. Well done. Okay, so as we have declared this inner class static, can we apply the same principle here as well? That if anything is static, we don't need object of this class. Maybe, maybe, बताओ. आपको समझ में आया मेरे में क्या बोला हूँ? हम्म. हाँ, means if I wanted to access inner class, I don't need any object of outer class, right? Means if you have the inner class is static, so you don't you know the like the how static works, right? How it's behave. So means to access this inner class also you don't need object of outer class, right? है ना? बताओ ये समझ में आ गया? Okay. Okay. What I'm saying, if we have a static class, so we don't need object of outer class to access this inner class. Okay, if we have inner class as a static, we don't need object of outer class to access this class inner class. To means this inner class will not depend on this outer class object, right? Because it is static. It is class property, it is not an object. This it is a class property, it is not an object property, right? Lucky. जैसे ही हमारा इनर क्लास जो है वो स्टैटिक हो जाता है तो वो क्लास की प्रॉपर्टी बन जाता है, और जो क्लास की प्रॉपर्टी बन जाता है उसे एक्सेस करने के लिए हमें आउटर क्लास की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम्म. Okay, fine, fine. So here, let's go here. So what needs to be changed here? So the as I have added static, you will get issue here. Okay. Of course, we are getting issue. Okay. So on the left hand side, what I have to tell, okay, that where this inner exists. Okay, on the left hand side पे क्या करेंगे? हम ये बताएंगे where inner class exists, right? Is है ना? Where inner class is. Okay, fine. Fine. So can I write it in any, where is inner? Okay. Inner class. Okay. Inner class. तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बताएंगे कि इनर क्लास कहाँ पे, तो वेयर इनर क्लासेस एग्जिस्ट आई विल राइट आउटर डॉट इनर, राइट? Okay, so we have outer dot inner. Fine. Then I will write, okay. Can I write outer dot inner is equal to, okay. So what I'm saying, outer dot inner, let's very listen very carefully what I'm trying to say. हम यहाँ पे लेफ्ट में बता रहे हैं कि outer dot inner
कहाँ, यानी जो इनर क्लास है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, आउटर डॉट इनर, देन S1 इज इक्वल टू, ओके, sorry, S2 is equal to, what we are doing here, we are creating an object, right? See, means listen first, just see, outer dot inner is equal to S2. Okay, then we will write here, we are not going to use S1 dot new something like this. It is not needed. Okay, what I can directly write, outer dot inner, directly I will create object of, okay, let's see what I'm trying here, insert new, okay, yeah, sorry, my bad. Let's remove this. Okay, ओके, देखो, मुझे ऑब्जेक्ट ऑफ जो इनर है वो तो बनाना पड़ेगा। लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग, बहुत इजी है, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं जो पॉइंट बनाने की बताने की ये जो कर रहा हूँ ना कोशिश, उसको ध्यान से सुनना। ओके, जब हम स्टैटिक क्लास की बात करते हैं ना, तो हमें स्टैटिक क्लास को, सपोज आई हैव अ क्लास विच इनर क्लास है ना, मुझे इनर क्लास एक्सेस करना है। क्या करना है मुझे? इनर क्लास एक्सेस करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास किसी क्लास के अंदर, मेरे पास क्लास ए है और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। ओके, इस प्रॉपर्टी होती है, अगर ये प्रॉपर्टी स्टैटिक होती है, ओके, अगर ये स्टैटिक होती है तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली राइट ए डॉट बी, है ना। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? लकी, लीना, बताओ, इतना क्लियर आ गया? बट यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। मेरे पास अगर एक क्लास है और इसके अंदर एक क्लास है, इनर क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इनर क्लास की बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इस बी का ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके, अगर मुझे मुझे इस बी का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओके, ओबीजे क्रिएट करना है, ओके, टू क्रिएट ओबीजे, टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट ऑफ ए की जरूरत नहीं है। सपोज आई हैव ओबीजे ए, ओके, और अगर मुझे इस बी का रेफरेंस क्रिएट करना है, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मुझे ए की जरूरत नहीं है, मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो किस तरह से कर सकते हैं इसको? लिसन, बहुत इजी है, ठीक है। सो व्हाट आई विल राइट, आउटर, ओके, डॉट इनर, ओके, आउटर डॉट इनर, okay, S2 is equal to, okay, so we will write outer dot inner and this S2 is equal to, okay, we don't need to write S1 dot new, then inner, we don't need to write this, okay, because if we will write S1, we are taking help of S1 object, we don't need that. Okay, can we eliminate this S1? Yeah, we will directly write new a dot outer dot inner, okay, new outer, directly you will see here, we are creating an object, but here you are not using any reference of S1, right? लकी, समझ में आया? बताइए, लीना, मेरी, लकी। ओके, कैन आई shall I repeat once again how it's work? Let's see. ओके, सी, यहाँ पे देखना, मैं लिखता हूँ आउटर डॉट इनर, तो आउटर डॉट इनर को तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, आउटर डॉट इनर, ये तो समझ में आ गया। S2 भी लिखते हैं, है ना, ऐसा, इतना तो समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है। हम्म, ओके, अब यहाँ इसके बाद में कहानी चेंज होती है। अब मैं यहाँ पे दो, एक और फंक्शन बना लेता हूँ। आई विल लाइक क्रिएट वन मोर क्लास, लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास एंड आई विल राइट इनर टू, तो इसको इनर टू बोल देता हूँ और ये इनर वन है, ठीक है। इनर वन, इनर टू, इनर टू जो है ना मेरा नॉन स्टैटिक है, ये स्टैटिक नहीं है, यानी इसको एक्सेस करने के लिए मुझे इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर चाहिए होगा। एक जो है वो हमारे पास स्टैटिक है, जिसको 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 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें स्टैटिक, सॉरी, जिसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें आउटर का ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। लेट्स ट्राई टू मेक दिस, ओके। तो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हमें आउटर का ऑब्जेक्ट लगेगा, ओके, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। ओके, फॉर नॉन स्टैटिक, ओके, नॉन स्टैटिक, तो नॉन स्टैटिक हमारे पास कौन सा है? इनर टू, है ना, इनर टू नॉन स्टैटिक। सो इनर टू का बनाना होगा तो क्या होगा, हम लिखेंगे आउटर, है ना, तो ये तो लिखना पड़ेगा, आउटर डॉट इनर, ये तो लिखना ही पड़ता है। ओके, अब इनर टू को करना है, इनर वन को करना है, तो इनर टू को करते हैं बिकॉज ये नॉन स्टैटिक, ठीक है। इनर टू, लेट्स से S2 इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली न्यू और इनर नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता, बिकॉज ये जो इनर इनर टू है ना, ये नॉन स्टैटिक है, ये ओनली क्लास है, स्टैटिक क्लास नहीं है, नॉन स्टैटिक क्लास है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें S1 का नीड लगेगा, तो S1 डॉट न्यू, देन आई विल राइट इनर टू,
इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, देन आई कलेक्ट s2 डॉट सी। ये बस ये समझ में आ गया। इसको करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आई एम इनर टू, है ना? तो आई एम इनर टू और इनर क्लास टू कर लेते हैं, ठीक है, इनर क्लास टू। ओके, लेट्स कॉपी द सेम थिंग फ्रॉम हियर and just paste it here, and I will write I'm inner class 1. Okay, that's fit. Okay, so for non-static we have to use the s1 reference. You can see here we are creating, okay, here we are creating only, okay, here we are saying outer dot inner then s2. Okay, that is clear. Now for static, how will it change? For static class we will do the same thing on the left hand side, left right, outer dot inner, then I will inner, then now I wanted to use inner one because inner one is a static. Okay, so inner one, then I will let s3. Okay, that is same for here as well, it is same, it is for here as well, because where issue persists, where when you create an object, here issue persists. Okay, always remember, on the left hand side you are only declaring it, you are not initializing anything, so you will not get any issue. Outer dot inner one s3 is equal to, okay, now I don't need of this, as this inner one is a static class. Okay, you can see it is static. I don't need reference of s1, so I can directly write new, then outer dot inner one, समझ में आ गया? Then I can write s3 dot say, yes, लकी, समझ आया? So s3 dot say, okay, I can actually say. Now here you will see difference. On the non-static part, we need object of s1 to create the reference for the inner two. But here for static, we haven't used anything. We directly use new outer dot inner, because this inner one can directly be accessed without a class reference. So means without object. So we are using class reference outer dot inner, है ना? क्योंकि outer के अंदर जो है वो static है, इसलिए हम डायरेक्टली उसको क्लास रेफरेंस से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली outer dot inner. Make sense? Okay, so this is what we have seen and talked about, uh, like inner classes and static class. आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आया? Anything you wanted to ask, guys? Please let me know. Okay. Hmm. मेन क्लास का मीन्स जो स्टैटिक है, मेन क्लास है। हाँ हाँ, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि नहीं? इस अगर आप इन एग्जाम्पल, अब अगर आप इसमें देखोगे, ये जो ऊपर के एग्जाम्पल्स है इसको निकाल दे थोड़ी देर के लिए, इसको निकाल देते हैं, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस। अगर आपने बोला कि अगर हमारा जो आउटर, हमारे पास एक आउटर क्लास है, जस्ट जस्ट लेट मी नो क्या मैं आपका क्वेश्चन सही से समझ पाया हूँ। हमारे पास आउटर क्लास है, उसके अंदर हमारे पास एक इनर क्लास है जो कि स्टैटिक है, ठीक है? तो क्या हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा to access that inner class, means that access, yeah, so the answer is in front of you. We have not used any object here, right? We have not used the outer class object, right? This is s3 we are creating, but it is not depend on any outer class. It is because means we don't need object of outer class to access this inner class, because this inner class is static, right? So जो भी static होते हैं ना, उनको आप विदाउट क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे देखना, इस एग्जाम्पल हमने कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया आउटर का। हमने बस ये बताया है कि n1 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि आउटर के अंदर इनर एग्जिस्ट करता है, बराबर है? Okay, so the answer of your question, Lucky, you don't need to use object of outer class to access the static class which is present inside that outer. Okay, Mayuri, ask पूछो पूछो, जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो आपको पूछना चाहिए, बताइए लकी।
सॉरी सॉरी, माय बैड। मयूरी, आपको कुछ प्रॉब्लम है? पक्का कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ना, प्लीज पूछो। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, ठीक है? पूछो पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम है? ओके, आज का कंसेप्ट समझ में आया? चलो वेरी गुड। हाँ लीना, पूछो, कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, एक तो हुआ होगा कि कुछ भी समझ नहीं आया होगा, एक तो होगा कि पूरा समझ में आ गया, वो क्वेश्चन ही नहीं है। समझ में आ गया, तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि दो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो कुछ भी नहीं समझा तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि समझा ही नहीं। दूसरा हो सकता है कि पूरा समझ में आ गया तो फिर भी क्वेश्चन नहीं है ना? तो मुझे पता है कि आप दूसरी कैटेगरी में लाया करते हो कि आपको पूरा समझ में आ गया, है ना? बिकॉज यू आर स्मार्ट, आई नो गाइज, यू आर वेरी स्मार्ट, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हो। तो या जस्ट कीप कंटिन्यूइंग, कीप वर्किंग हार्ड, तो आपको सारी चीज़ें और भी हम आगे सीखेंगे। सो वी विल लाइक डू दोस थिंग्स। ओके, फॉर नाउ यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा